Hi all, I'm Ditkiso this side from Stray Fleet team, and I welcome you back to my channel. So just took entry in this trade, and as of now, IVS spike situation is happening. This call is just spiking, but this put is not giving up any value. So initially, I made this a triangle of 450p C and 850p, but it started gaining its value quite high, and at the same time it was not giving its value. So I thought I should take credit from the put side, and that's what I did. But it is not giving up its value. Okay, this is not giving up its value, and at the same time put is call is spiking a lot. So this is a matter of concern for me as of now, and that is the reason why wait a while, yeah, and that is the reason I'm having a loss of 4 point something k. The maximum loss for the day which I can take is 10k to 12k at max. Okay, I will give it a buffer zone of some points, but nothing more than that. Okay, so yeah, that is it. So talking about the labels, although there is nothing more to tell about the labels because market not giving any kind of respect to any level. Okay, I thought it might take resistance in this from this thing. Okay, but I didn't. And the only place where it can take a resistance is this, otherwise it will try to test this thing, this high. Okay, this is what is the visible from here. Let's see, I will be giving you update on this later on. Okay then. Okay all, so a quick update, time is 9:57 and what I did, I was trading with these two things. Okay, this one and this one, but these were not following the way I wanted it to. Why? Look at this, means market is not sustaining anywhere. Every day market is coming, it is becoming volatile, it is not sustaining anywhere, and as and when you will take exit, it will start going sideways or consolidate like this way. Okay, I took exit yesterday, I guess somewhere here, and more or less at break even 1500 loss was the exact figure. But yeah, break even, because I was not feeling comfortable that, but I didn't know that market will go up so much. Otherwise I would have been in a very good profit yesterday, but that's completely okay, and that's why I didn't make any video, because I took a very quick out, and that too at break even. It was not carrying any kind of learning thing, that's why. Okay, now talking about this thing, how market is going. So sorry, I'm a bit I'm having a bit cold, that's why I'm sounding so down. Okay, so now talking about this thing, look at this, how market is behaving. Okay, from a low of 147, it is continuously going up. 120 points of move is already done, and that too in one direction. Just two red candle has been formed in between, and that actually favored me. From 6-7k of loss, it is now trading at break even almost. Yeah, okay, and at a point of time it was up by up 3k. When it went down this much, when it crosses this the low of this candle, it my overall MTM was 3k just in Nifty trade. I'm not talking about ITC trade. Okay, so that is the thing, it was giving a very good decay. But let's see how much more I can capitalize from here. This will be a good watch. Okay, the maximum loss I already have told you is 10 it is 11-10k, but now I'm making it 8k because I will be taking 3k of extra risk in the second half. Okay, so for the first half my maximum risk is 8k, nothing more than that I will be giving to the market. So let's see, I will be giving you update on this later on. Okay, okay, by the way, I just forgot to give you the adjustment thing, what adjustment I will be doing. See, as and when it will be crossing 34, okay, so what I will be doing, मैं इस P को switch कर दूंगा एक P स्ट्राइक ऊपर. ओके, 34 नहीं 33 भी अगर क्रॉस करता है ये, तो फिर मैं एक स्ट्राइक ऊपर कर दूंगा स्विच. ओके, दिस इज थिंग, एंड द सेम अप्लाइज टू पी ऑल्सो. अगर पी भी 33 को क्रॉस करेगा तो मैं 500 सी जो है उसे कन्वर्ट कर दूंगा 450 सी पे. ठीक है, so this is the adjustment point for now for me. Okay, let's see, I will be giving you update on this later on. So quick update, time is 10:32 और मैंने क्या करा है, मैंने सारे पोजीशन को बुक कर रखा है ब्रेक इवन पे. एंड वाई आई डिड दिस, ओके, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था. ओके, और मे बी आई वॉज वेरी एग्रेसिव विथ माई एडजस्टमेंट. शायद मैं कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होकर एडजस्टमेंट कर रहा था आज, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट दैट इज़ कमिंग इन द मार्केट. इफ़ यू लुक जस्ट दिस फॉल, ओके, फ्रॉम द हाई टू लो 265 to 168 means almost 100 points of move in what, 3 to 5 6 candles,
30 minutes. Okay, so in 30 minutes market is falling 100 points, in 30 minutes market is going up 100 points. So the way market is moving, so that is why I am doing very aggressive adjustment, and this is not working for me. I am running from a negative 6k to positive 4-5k, then again to break even, then again to break even from the both side, and this is how my trade is going on. So it's better for me to just get out, otherwise why to take a hit that is not coming up with any reward, okay, simultaneously. So yeah, this is the thing. So it's not like I have ended up the trading for today. No, I will trade in the second half, and that's what I will be putting in this video itself. So that is the reason this is not the end of the video for today. Okay, second half I will definitely be trading, and if and when I will be trading, obviously I will be putting this in the video so that you can also learn and enjoy the trades. Okay, so that's it for this. Okay, I will be giving you update on this later on. Okay, quick update on a trade I just took. Okay, time is 11:03. I took an entry in Page Industry, and the analysis, I just wanted to give a summary of the analysis which I have done. See, it was continuously taking support from this zone. Okay, and this is also a 200 EMA. So in 5-minute time frame, and it has made a M kind of pattern, means double top pattern. Okay, so सो अगर ये मैंने एंट्री कहाँ किया, मैं ये पहले बताता हूँ. तो जब यहाँ पे डोजी बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, और वो मुझे लग रहा था कि ये बुलिश नहीं है, इट इज़ जस्ट अ हार्ड वे विच बायर्स आर टेकिंग टू पुश द प्राइस अप, बट दे आर जस्ट नॉट एबल टू. तो व्हाट आई डिड, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने पहले वेट किया कि एक रेड कैंडल बनना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम दिस एनालिसिस ऑल्सो रिलेटेड टू निफ्टी, क्योंकि मैंने निफ्टी का एग्जिट उसी वक्त किया था जब आपको मैंने अपडेट दिया, उसके जस्ट बाद मैंने एंट्री लिया एक्चुअली. ठीक है, और ये जैसे ही रेड कैंडल बना, मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड किया, बिकॉज आई एम डूइंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो दैट इज़ द रीज़न. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 या 4 नहीं 5 क्वांटिटी ऐड किया, बाकी क्वांटिटी मैंने इस कैंडल के पास ही डाल दिया, और एसएल मेरा ये था. मीन्स आई हैव टेकन अ एसएल ऑफ व्हाट 240, और मेरा एसएल ये था 280. ओके, मीन्स 40 पॉइंट्स का मैंने एसएल रखा, और मेरा टारगेट था ओपन. ठीक है, क्योंकि निफ्टी वॉज फॉलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Look at this high move. Page industry moves this way only. Okay, you have to be very quick if you have taken entry. Okay, and look at the fall also, look at the rise also. This is how page industry moves. So you have to be very quick with the entry and exit point in page. ठीक है, तो मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ. तो ये देखो आप, ये रहा ट्रेड. ओके, वेट. तो यहाँ पे मैंने 3400 बुक किया. मेरा एसएल जो था वो सिर्फ 500 समथिंग था, क्योंकि मैंने एंट्री की, अगर आप देखो एंट्री, तो मैंने 5 लॉट्स किया 240 पे, और 10 लॉट्स किया 250 पे, और मेरा एसएल था 280 290. ठीक है, जो मैं ट्रेल करता गया, फिर लास्ट में उसे कट करना पड़ा, क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर पे बुक किया अपने पोजीशन को. तो यहाँ पे मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था वो प्रॉफिट नहीं, एक्चुअली मैं दिखाना चाह रहा था आरआर, विच आई केप्ट हियर, एंड आई वाज डूइंग इट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. दैट्स व्हाई, एंड आई वाज जस्ट डूइंग इट इन फन. ओके, सो मैंने सोचा कि ज़्यादा मैं हिट नहीं लूँगा इस पर, तो मैंने सिर्फ 500 का हिट लेकर के मैंने इस पर एंट्री लिया, and I booked almost 6 times of what I have raised. Okay, so this is what I was telling you about. Oh wait, उसमें मैं दिखाता हूँ कि मैंने इस पर निफ्टी का क्या कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो अगर आप ये देखो, निफ्टी का चार्ट है, उस समय निफ्टी ये ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बनाया था. ठीक है, और उस समय इसका लो टूटा था, तो आई वॉज वेरी श्योर कि ये अब नीचे जाएगा. ठीक है, तो और ये उस समय नीचे जाना स्टार्ट भी हुआ. तो फिर मैंने एग्रेसिवली, पहले मैंने सोचा एंट्री लूँ ना लूँ, आई वॉज वेरी इंडिफरेंट. फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं एंट्री लूँगा, मैं एसएल बहुत ही छोटा रखूँगा, सो दैट आई डोंट गेट अ बिग हिट, बिकॉज हाँ, दैट मैंने रीज़न आपको पहले ही बता रखा है कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग को लेकर के. लेकिन हाँ, फिर मैंने यहाँ पे लिया, फिर मैंने इसका राइड यहाँ तक लिया है, सॉरी यहाँ तक एक्चुअली लिया है. हाँ, उसके बाद फिर इसने कुछ 70-80 पॉइंट्स और फॉल दिया, बट मैंने यहाँ तक इसको राइड करा, फिर मैंने छोड़ दिया इसे. एंड रीज़न फॉर दैट, यू माइट बी आस्किंग द रीज़न फॉर दैट, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो जोन है, ठीक है, ये पूरा जोन जो है, ये काफ़ी देर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है. तो आई वॉज थिंकिंग कि हो सकता है यहाँ पे या तो रेंज बाउंड होगा, या तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और ये बाउंस बैक ही कर गया, वो भी कंप्लीट बाउंस बैक इट हैज़ सोन. So this is a thing I just wanted to update you on this. And now talking about this trade, sorry wait, this ITC one. ठीक है,
तो ITC का मैंने अपडेट आपको काफ़ी दिनों से नहीं दिया है, तो मैंने कुछ क्वांटिटी ऐसे ही ऐड करा था बीच में, कुछ 50 पैसे पे सेल करके, 70 पैसे पे सेल करके, तो ये 16,000 क्वांटिटी हो गया। बट मेनली जो मेरा ये प्रॉफिट है वो 6400 क्वांटिटी से ही है, ओके, जिस पे मैंने काफ़ी अच्छा पॉइंट बुक किया। मैंने एक लॉट सेल किया था 2.7 पे, एक लॉट सेल किया था मैंने 2 रुपीज़ पे, ठीक है। सो मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उनमें ही बुक किया, बाकियों में तो मैंने पेनी कलेक्ट किया है। इन टोटल 19,000 इज़ द प्रॉफिट इन दिस, ओके। सो जब मैं मंथ एंड का प्रॉफिट का एंड स्टेटमेंट डालूंगा तो फिर उसमें ये भी शेयर करूँगा मैं। अभी ये मैंने लिमिट ऑर्डर पे डाल रखा है 0.1 पे निकलने के लिए, कभी भी ये एग्जिट हो सकता है, ओके। सो दिस इज़ द अपडेट नाउ, एज एंड व्हेन आई विल बी टेकिंग एंट्री, ठीक है। तो फिर इस अकाउंट में मैंने आपको बोला था मैंने कोई एंट्री ले लिया है, तो एज एंड व्हेन आई विल बी टेकिंग एनी एंट्री इन दिस, तो मैं उससे अपडेट जरूर करूँगा, ओके। दैट्स ऑल, आई विल बी गिविंग यू अपडेट ऑन लेटर ऑन। Okay guys, a quick update, time is 3:04. So as I have told you that I will take entry in second half, and the same I did. Okay, wait, I think I have taken few quantities in normal and few in MIS. So you might be thinking why I have taken position in MIS, because I want it to be auto squared up by 320.22. Okay, that is the reason. Otherwise I will definitely square them off myself. So now what is the adjustment for now? तो अगर आप देखोगे तो 18,000 का PE मैंने ले रखा है, 18,450 का C ले रखा है, राइट। सो एडजस्टमेंट क्या होगा कि अगर इन दोनों में से कोई भी 26 क्रॉस करता है या 27 क्रॉस करता है फॉर दैट मैटर, आई विल बी स्विचिंग द अदर साइड 1 स्ट्राइक लोअर। मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल दिस PE क्रॉस है 27, देन आई विल बी स्विचिंग दिस to 400 PE, means from 450 CE to 400 CE, okay. This will be the adjustment for now, and as of now this is giving me almost like 2.5k profit, because in morning you know that I have booked everything at break even, and 2k is the profit from this one almost. So yeah, this is a thing, and just wait, let me give you a follow up on the other thing also. What yeah, तो अगर आप इधर देखोगे तो मैंने अब इससे भी कम्प्लीटली बुक कर दिया है इस ट्रेड को भी, तो ITC का मैं कुछ भी होल्ड नहीं कर रहा हूँ, ओके। दिस इज़ इट फॉर इट। नाउ आई विल बी कवरिंग अ समरी ऑफ इट इन द मंथली स्टेटमेंट विच आई विल बी पोस्टिंग दिस मंथ। तो उसमें मैं थोड़ा सा इसको फॉलो अप दे दूंगा कि मैंने ये कैसे लिया था, क्यों लिया था, ये सब कुछ मैं थोड़ा बहुत फॉलो अप दे दूंगा, ओके। तो दिस विल बी इट, एंड लेट्स सी हाउ मच DK आई विल गेट फ्रॉम इट। आई विल बी गिविंग यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay, then time is 3:12, and at a point of time I was up like 7k something just now only, okay. In a matter of no time a good decay happened and I was up to 7k. So what happened after then, this call has spiked, completely spiked, because this move, okay, from good 20 points of move, but still I was not expecting such huge spike, but this spiked a lot from 22, it just a spike to 32. So what I did there, first of all my gains washed out from there. तो फिर मैंने क्या करा, जो 18,000 का PE था मैंने 1850 पे उसे कन्वर्ट किया पूरा का पूरा पोजीशन, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग गुड प्रीमियम इन दिस, एंड दिस इज स्पाइकिंग अ लॉट, ओके। Can't help it, this is what it is. The call side premium is quite high. If you'll see, market is exactly at the midpoint of these two, but this is trading at 23 and this is trading at 30. Can you believe it? And still the intensity of the call is quite high. I don't know what is happening. So all my gain has just washed out, okay, and I was sitting in a good 7k overall MTM profit, but yeah, this is now something like that. Let's see how much can I get from here. By the way, you might be thinking what is the SL, what is SL for me now. So negative 4k is what I will be giving at max today, okay. 4k 4.5k at max. Let's see, because I just want to give a buffer zone, but look at the move, look at the spike in this. This is not sustaining anywhere here. I don't feel like it. So obviously I need to get some credit from the put side, otherwise this might just kill my MTM today, okay. Let's see, I will be giving update on this, okay, later on. The way it is moving, it is horrible, by the way, let me tell you this. Okay, then final update, time is 3:22 and it will be auto squared off anytime, or I might square it off myself anytime. So
this is not moving the way I thought it will be. Okay, by the way, 2k if it will hit now, so I will be getting out. Okay, because call is spiking a lot. Okay, if you'll see, I know the movement is quite high, but at the same time the call premium is quite high. Okay then, okay, this will be moving anytime the way this way. तो जो भी हो, तो मोर और लेस ब्रेक इवन पे मैं बंद आज भी हो रहा हूँ, ठीक है। कल भी मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करा था, मैंने किया था बट इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने आपको बताया भी है कि क्योंकि कल मैं 1500 लॉस पे निकल गया था, तो वो मोर और लेस ब्रेक इवन था। देयर वाज नथिंग मोर आई कुड हैव टोल्ड यू इन दैट वीडियो, दैट्स व्हाई आई थॉट आई वोंट बी मेकिंग एनी वीडियो, एंड टुडे आई मेड अ वीडियो. So let's see. MTM does 2k, but yeah, this will auto scale off it itself. I just want to see what will be the spike in the pre. Okay, 3k, this is spiking a lot. Although if you'll see, the strange part is market is just there. Okay, it is moving in this 2-3 points of range only, but a spike is a lot, it is hell lot. And VIX is also down. I don't know. This is not allow. Okay, this a very bad exit for me, really bad exit for me. From, you have seen it yourself, a very bad exit for me from 46 41 something like that. Slippages of 5600 rupees. And the strange part is VIX is going down, but premium is just spiking a lot. Premium is spiking a lot. This premium, this 450C, I got exit at 40.92 and now trading at 49. Yeah, there only. But yeah, a strange part is this, that call is getting its value a lot. Although this is the last 10 minutes, so it shouldn't have gained so much because of averaging, but that didn't happen, and it kept on spiking its value, and at the same time put simply stopped gaining its decaying its value. And VIX at the same time is decaying, means everything is just against each other. Okay, this is a very hard time for seller, I would say, but yeah, can't help it. This is what it is. We just have to manage our risk, that's it. Although I thought of giving just 2-3k, but I ended up giving twice of it. Yeah, this is part of game actually. Sometimes a spike in the premium happens so quick that we just want it to calm down a bit so that we can take exit, and I was waiting for that only, but it was the end of time, so yeah, I was stopped from acquiring my trades. So yeah, this happens. I hope you learned from something from my video. Learning from something from my videos and gaining and understanding all the adjustment which I share and everything, and you are liking my content. So if you are liking my content, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.